Since a particle is performing circular motion, okay, along the circumference of a circle, the radius of the circle is small r. The positions of the particle are specified that the particle is initially at point A, students. Answers, the particle is initially at point A and the particle is set to move in anti-clockwise direction, students. Okay, so in this case, its motion is anti-clockwise, students. The question of which I'm asking you, students, I wanted to find out the magnitude of displacement, students, and the distance traveled. Okay. Magnitude of displacement. And distance traveled by particle. Distance traveled by particle, students, when it moves from point A to point B. That's a question number one. Second case, when the particle moves from A to C, moves from point A to point C. Third case, moves from point A to point D. And finally, for one revolution. Is the question clear to all of your students? Yes, sir. Okay, students, please try to solve this. Again, I'm telling you the question, students. I'm repeating the question, students. A particle is set to move in a circular path and the motion is in anti-clockwise direction. The particle starts its motion from point A. You have to find out two things, students. You have to find out magnitude of displacement in each case and the distance covered by the particle. In the first case, when it's moving from A to B. Second case, it's moving from A to C, then from A to D, and then for one complete revolution. Get me all these particular four answers right now. And one who finishes off, please raise your hands.
Yes, anybody? Yes, Preet Kaur, Avneet, Diya, Gauri, Jyoti, Krisha, Mihir, Om Panchal, Krisha, Rishi, Sakshi. Oh, somebody raised hand. Yash, and finally Zia. Mihir has raised hand. Mihir, have you finished with all? Yes, sir. Okay, chalo batao. Sir, first you'll find the circumference of the circle. Okay. So in the first question, when it moves from A to B, Hmm. the distance traveled will be 1/4 the circumference, which is Absolutely correct. And when you move from A to B, students, the first part is your distance covered will be 1/4 the circumference of the circle. The answer will be 11/7 r. 11 by 7 r. Sir, if we take it 22/7 pi, or we can get Keep your answer in pi only. Don't worry. Keep your okay, answer in. so pi r by 2. Absolutely correct. So the answer will be pi r by 2. Okay. Sir, the displacement from A to B will be r root 2. We can find it by Pythagoras theorem. Okay. The magnetic distance will be equal to what? How do you consider? Means Sir, if it is r, or is it r by root 2? root 2r. Root 2 r. How do you get this? Sir, if we draw a straight line from A to B, we can form a triangle and use Pythagoras theorem. Absolutely correct. Students, यहाँ पे देखो उन्होंने he said to move from A to B. Students, that means initially the body is over here, and then after certain instant the body has reached over here. Students, are you getting it? A tangent dot at any point determines the direction of motion of that particular body. Please everybody ध्यान से सुनना. पहले अगर तुम सेंटर के हिसाब से देखोगे तो तुम बोलोगे इसमें सब बॉडी यहाँ पे है, अभी बॉडी यहाँ पे आ गया, है ना? So the body has undergone a displacement. Okay, so this is initial position and final we consider. So the change in displacement is from here till here. If I say this is a change in displacement, students, ये हुआ change in displacement, students. क्या ये clear हुआ? ये जो है ना, ये जो circular part है students, ये तो distance covered हो जाएगा. This is distance covered. That's why what exactly Mihir said it. Distance covered is 1/4 of the circumference of a circle. But when it goes for displacement, this is r, this is r. So what exactly this will be? Root 2r. Students, क्या ये part clear हुआ सबको for the first answer? Is this clear, all of you all? Yes. Or is it clear? Yes, sir. Prisha, what about you, Prisha? Zia? Yes, sir. Zia, why are you sounding so low? I'm not well, that's all. Who told you to have ice cream? I am not having ice cream. Okay, fine. Okay, Prisha is also clear. Please, students, if you have anything to ask, do stop me and ask. Please don't take it blindly. Okay, so that's the first answer made. Now, Gary on me. अगर तुम्हें A to C जाना तो क्या करोगे? Sir, it will be half of the circumference for Absolutely. distance. देखो तुम A to C जाओगे यानी ये point A है और तुम C की तरफ जाओगे. Students, so means you're trying to go for circumference, but it is half the circumference. And ये part है ना, students. So what exactly the distance covered? Pi The r. distance covered will be, yes, that means half the circumference of the circle. So what exactly answer will be? Pi r. Absolutely correct. But what is the magnitude of displacement over here will be? यहाँ पे magnitude of displacement क्या हो 2r. जाएगा? Yes, क्योंकि देखो displacement कहाँ से कहाँ है? तुम A to C की तरफ गए ना? You started from here, you moved all the way and reached. So this was the initial position. This is the final position. So what exactly displacement will be? 2r. Hope this part is clear to all of you all. The second part of the answers. देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. This is when you move from A to B, and this is when you move from A to C. Now can you get an answer from A to D? 4/3 pi r. Absolutely correct.
When you're going for A to D, that means it's 3/4 of the circumference, students. तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो क्या हो जाएगा 3/4 of circumference. So what exactly my answer will be? 3 pi r by 2. This is what you said it? No, I said different answer. So what exactly will be? A to D क्या होगा? Distance covered क्या होगा? 3/4 होगा ना? Yes, sir. What answer you gave it for distance covered? Sir, I'm checking once again. I had done some calculation mistake. 3/2 Oh. minus correct. Okay, fine. So जब देखो A to D है ना तो देखो ना ये था अभी हमें 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 क्या पूछ कर हमें proof getting the answer from A to D students. यानी you're starting from here and you're reaching at point here. This is what the distance covered, students. So can I say this is 3/4 of a circle? So 3/4 of circumference. This was the center. So answer ये होगा. What is magnitude of displacement? √2r. Correct. ये initial position, ये final position, ये तुम्हारा R है, ये तुम्हारा R है, तो can I say √2r हो जाएगा. Agreed. देखो ना 3/4 of the circle यानी ये तुम्हारा initial position. You were over here, now you have reached over here. When you move from A to D. Clear here, students? Yes, sir. The rest of the students who are there in the lectures, is it clear to all of you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now when I speak about the last one, for one oscillation, students, for one full oscillation, what is The the distance? circumference of the circle. 2 pi r. So for one complete oscillation, students, what exactly the distance covered? So the distance covered will be equal to circumference. And what is the displacement covered in this 0. case? Very good. Why 0? Because it returns to the same point, so there is no net displacement. So when you start from here and when you come back to the same point, what exactly, students, your resultant displacement is 0. Students, did you understand this thing? ये concept किसके ऊपर मैंने पूछा है? जो last time मैंने explain किया था, what do you mean by distance and what exactly mean by displacement? Well, students, when I asked you all what exactly we finished in the last lecture, you all said it, distance and displacement. So students, what exactly distance is? The total length covered by a body during the course of its journey. So during the course of journey, total length कभी भी तुम cover करोगे वो बन जाता है distance. लेकिन displacement क्या बनता है? For the course of journey, it's only the distance is the shortest. The displacement is the shortest distance. The answer is, students, displacement. Displacement is the shortest distance between initial position and final. Initial position and final. Like that we consider. क्या ये clear हुआ, students? Yes, sir. Can I erase this, students? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ? Yes, sir. Okay. Sir, So 1 minute. Yeah, just sir, in this question, can we write the direction of displacement? they can ask you in terms of direction. ये क्योंकि मैंने magnitude पूछा ना. No, like I had a doubt. No. If we have to write, how No. will we write? Now suppose if I want to say about the, chalo, let us go for this part. You started from here, reached over here. Can I say this is the initial, this is the final? Yes, sir. Are you getting it? So can I say Yes. this? यानी अगर तुम बताओगे तो ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा suppose if I say this is I cap. Yes. So can I say this is RI? RX I cap. Agreed? Yes, sir. This is minus RY J cap. Yes, sir. Now I want to find out the resultant. Are you getting it? So how do I go for the resultant in this case? The initial position is final position is over here. So how do you go for it? कैसे बताओगे इसका? Tell me. क्या करोगे तुम? Tail, head, tail, head. Tail of the first vector to the head of the second vector. So देखो ना यहाँ पे देखो. Can I say this is RX I cap? Agreed? या RX bar plus change in displacement is equal to RY bar, but along the negative direction. क्या ये clear हुआ, students?
Yes. So what exactly change in displacement I can consider will be equal to ry minus rx. ये नेगेटिव में था, ये देखो ये हुआ तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में, Okay, यानी sir. स्टूडेंट मुझे इसका डायरेक्शन फ्लिप करना पड़ेगा. मिहिर, you only raised this question ना मिहिर? Yes, yes, sir. Yes, please students see he has raised a good question in that case. कि अगर मुझे स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर मुझे इसको डिस्प्लेसमेंट में बताना है तो कैसे बताऊंगा? तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मेरा आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? मेरा आंसर आ रहा है डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस आर वाई माइनस आर एक्स. यानी व्हाट शुड आई डू? आई शुड रिवर्स द डायरेक्शन. यानी अगर ये सेंटर ये है, नाउ इफ आई टेक दिस, can I say these are two vectors at an angle of 90 degree? Can I say my resultant will be shifted parallel to itself? Yes. ये हुआ मेरा रिजल्ट. क्या हुआ? क्या क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. Understood. Okay, please try to think very properly. Okay, the question was based on the magnitude, but he raised it for vector form. Can I erase it now students? Yes, sir. So which other topic is going on in physics with you all? Students? Students, So can you in hear the me? last class we did some questions on friction. Okay, students. Now we go with respect to a certain relation with respect to speed, velocity, and acceleration, students. Okay. Suppose students, if in case if I happen to ask you what exactly is speed, what exactly velocity, students, and what exactly is acceleration. Students, the basic relation is what, speed being a scalar quantity. It is completely described by magnitude only. Velocity is a vector quantity, students. Acceleration is also a vector quantity. Do keep this in mind, students. If somebody asks you what exactly is speed, then how do you speed defined as? Speed is defined as a distance covered by the body per unit time, students. हाँ, ये ध्यान में रखना कि हमेशा ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. लेकिन अगर तुम्हें कभी किलोमीटर पर आर में दिया है स्टूडेंट्स, तो कन्वर्टेड, सपोज इफ आई गिव यू x किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट्स अ कन्वर्जन? इट्स x into 5/18. दिस आंसर विल बी इन मीटर पर सेकेंड. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. या स्पीड हो या वेलोसिटी हो, किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 5/18. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. कन्वर्टिंग किलोमीटर्स पर आवर to मीटर पर सेकंड. Velocity, students, is defined as rate at which displacement takes place. So ds by dt also I can consider. Yeah, actually किसका definition? मतलब students average velocity क्या है? You're getting it? Rate at which displacement takes place. What is average acceleration? Rate of change of velocity with respect to time, students. That is why the unit is what? ये मीटर पर सेकंड है students. Unit ये क्या है? मीटर सेकंड स्क्वायर. So acceleration is simply considered to be as what? dv by dt, rate of change of velocity with respect to time. So these are the basic formulas for speed, velocity, and acceleration, students. Now, when I speak about for uniform speed, now the next concept I'll consider will be uniform. अगर किसी ने पूछा students, what exactly you mean by the term uniform speed, uniform velocity, uniform acceleration? So students, what will say? अगर तुम्हें ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें यूनिफॉर्म स्पीड को समझना है तो लेट अस अंडरस्टैंड ग्राफिकली. Let us understand graphically. I want to understand uniform speed. Listen carefully, students. We are over here to understand the concept of uniform speed.
अगर मुझे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में समझना है तो कोई मुझे बता सकता है स्टूडेंट्स? मुझे ग्राफ अगर मुझे प्लॉट करूंगा तो शुड आई टेक अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम या स्पीड वर्सेस टाइम टू अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म स्पीड? Distance versus time. Distance versus time. Distance versus time, clear? Yes. Why not? Distance versus time. But if somebody says that I can take speed versus time also, why not? हेलो देखो ना, देखो मैंने देखो स्पीड वर्सेस टाइम लिया, चलो मुझे यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बताना है तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ ना, क्यों नहीं? क्या यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है? हाँ स्टूडेंट्स, डज दिस ग्राफ स्पीक्स अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड? हाँ सर, देखो ना टाइम बढ़ रहा है, 5 मिनट्स स्पीड उतना ही है, 10 मिनट्स स्पीड उतना है, 15 मिनट्स स्पीड उतना है, 20 मिनट्स, यानी मेरी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है फॉर लास्ट 20 मिनट्स। ये ग्राफ किसका? यूनिफॉर्म स्पीड का भी तो है, लेकिन हमें यूनिफॉर्म स्पीड निकालना है फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ. So what kind of a graph I'm going to get it? So the graph will be inclined at an angle of 45 degrees passing through the origin. This is going to give me a correct approach for uniform speed. What is uniform speed? So uniform speed is when a body, suppose if I go for equal time, please try to go for equal time on x-axis. So for time to be equal, look at the distance covered by the body. Look at the distance covered by the body. So what exactly a definition holds true is, if you look at the definition, what exactly the definition speaks about? When a body covers equal distance, equal distance, equal distance, equal distance, in equal interval of time, equal interval of time, equal interval of time, then the body is said to move with uniform speed. यानी अगर मैं इसका स्लोप फाइंड आउट करूँ ना स्टूडेंट्स, ये ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करूँ तो मुझे स्लोप मिलेगा यूनिफॉर्म स्पीड. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. कुछ Yes, sir. समझ में आया स्टूडेंट्स? प्लीज, आई एम ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड थिंग्स व्हिच ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम अक्रॉस इन क्लास 9th. मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने बोला कि आई डोंट नो अबाउट इट, आई एम it seems that I'm interacting with you for a long time students. After a long time I'm interacting with you all, है ना? Yes. शायद ज्यादा दिन हो गए लेक्चर्स को, is it? Yes. Like 1 So week. please, no, whatever days, but I had done something in the last lecture. आज के लेक्चर में बैठने से पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते तो अच्छा होता, या तुम 9 का भी गो थ्रू करते तो भी अच्छा होता. You would have been able to catch it more faster students. तो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताना तो व्हाट एग्जैक्टली व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा. अगर मुझे यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए तो क्या करोगे सर? सिंपल सिंपल, आप ग्राफ प्लॉट करो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज पासिंग टू ओरिजिन. वही अगर मुझे चाहिए ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, क्या मुझे मिल सकता है? क्यों नहीं? यानी इसी का अगर मैं स्लोप निकालूं तो मुझे ये मिलेगा, ये देखो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी along with magnitude the direction also remains constant. यहाँ पे magnitude remains constant, यहाँ पे magnitude के साथ में direction also remains constant. That means the body is said to move with what? Uniform velocity. So what is uniform velocity? When a body covers equal displacement, equal displacement, equal displacement in an equal interval of time, equal interval of time. See, the time interval is equal, then the body is said to move with uniform velocity. Clear? Yes, sir. अगर मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या बोलूंगा मैं? It किसका actually ग्राफ बनाऊंगा मैं? किसका ग्राफ बनाऊंगा? टेल मी. velocity and time. Okay, velocity time graph. How is the graph going to be? Will the graph will be a Straight- curve? Will it be a straight line? Will it be parallel? Straight line at 45 degrees. Yeah, absolutely correct. It will be at an angle of 45 degrees passing through the origin. Yes, sir. What will be the acceleration time graph? Students, यहाँ से मुझे जो acceleration time graph मिलेगा वो क्या होगा? यानी इसका slope Straight line. क्या होगा? Straight line. Straight line parallel to which axis? Exactly. Time axis. Agreed? Yes, sir. स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हो रहा है? इट सीम्स लाइक दैट शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज तो सिर्फ मैं मिहिर को ही सिखा रहा हूँ. मिहिर ऐसा करता है ना, मिहिर Yes, sir. बाकी सबको निकाल दो. तू और गौरी रिस्पॉन्ड कर रहा है तो तू और गौरी अंदर रखता हूँ, मैं तुम दोनों को इधर रखूंगा.
Shall I remove everybody else? तो थोड़ा सा चैप्टर भी फटाफट हो जाएगा। मैं उनको सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा, उन लोग आंसर देंगे तो उनको बताने की जरूरत है, तो सीधे हम एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। यू नो स्टूडेंट्स, पोर्शन किन लोगों का फास्ट हो जाता है मालूम है? जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी में रहते हैं, जिनको रिविजन। ओह, प्रिशा इज आल्सो देयर। वेरी सॉरी प्रिशा, आई फॉरगॉट। यू डोंट अनम्यूट, दैट्स द रीजन प्रिशा। आई गेट वेरी एंग्री ऑन टू यू। यू डोंट अनम्यूट योरसेल्फ यार। अनम्यूट करोगे तो मेरा तुम्हारा भी नाम ले देता ना मैं। ओके, तो अनम्यूट करो ना। जिया को भी बोलना पड़ता है, ऐसे फोर्स करना पड़ता है बोलने के लिए। Students reply and respond in that case. Now see what exactly Mihir said it. He made it very clear. What exactly uniform acceleration we consider is when a body covers equal change in velocity. Students, यहाँ पे देखो, equal change in velocity. यानी if in case if I happen to go for any 2 points, equal change in velocity in an equal interval of time. See, equal change in velocity in an equal interval of time. What is the body set to move? The body set to move with what? Uniform acceleration. The slope of the graph is uniform acceleration. Agreed? क्या क्लियर हुआ? Yes, sir. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा तीनों केस में? कोई बता सकता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप? y2 ऑल थ्री केसेस क्या फॉर्मूला यूज करोगे? Change in y by change in x. yes चेंज sir. इन y by change in Delta x, y by delta x delta y by delta x, that is y2 minus minus y1 y1. upon x2 minus x1. Very good. This is what you consider as a point slope form. अगर मैंने पूछा स्टूडेंट्स व्हाट इज ग्रेडियंट, व्हाट इज ग्रेडियंट का मतलब क्या? I asked you tan theta. What is gradient? I asked you, that means Tan theta. यानी देखो मैंने स्टूडेंट्स मैंने ये पूछा थीटा, ये पूछा थीटा, ये पूछा थीटा। स्टूडेंट्स व्हाट इज tan theta? Look at this right angle triangle. What is tan theta? It says opposite side upon adjacent. Opposite upon adjacent. y2 minus y1 upon x2 minus x1. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Sir, for a हाँ, uniform speed or uniform graph, will it always be at 45 degree? yeah, of course, because the word uniform itself speaks about it. Sir, so if we use tan theta, we will get always 1, no? Yeah, you will get it as 145 degrees we consider. That's one Okay. ratio you'll get it. लेकिन अगर तुम्हारा स्लोप यूनिफॉर्म है, लेकिन maybe in that case, at a certain angle, if I happen to give it to you, then in that case your gradient might vary. Yes, sir. Okay, that depends on to the type of problem thrown across to you. So gradient simply we consider as tan theta we consider. So अगर किसी ने अगर कभी किसी ने पूछा what exactly is slope of distance time graph, so what is the answer? Slope of distance time graph is speed. What is slope of displacement time graph? Answer is velocity. What is slope of velocity time graph? Answer is duration. Slope is simply ratio of y by x. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैंने पूछा व्हाट इज एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या होगा? एरिया अंडर द ग्राफ, तो उसका मतलब क्या? हाँ स्टूडेंट्स, एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या? एनीबॉडी? Displacement. डिस्प्लेसमेंट? हाँ, Yes, sir. I think so. गौरी गौरी कम ऑन, चलो टेल मी, ये तुम्हें किसका ग्राफ दिया मैंने? ये कौन सा ग्राफ है? It is speed. Sorry, distance versus time. Absolutely correct. Now my question is, Gauri, can you find out area under the graph? Yani, what part of the graph you will look into it to find out area? The Kisko triangle part. triangle part. Suppose if I name this triangle as O, A, B, and there is a point C over here. So which part of the triangle you will see? OAB. Absolutely correct. And students, ये तुम्हारा area part होगा. ये तुम्हारा shaded region होगा.
So what is area of the triangle will be? What is area of the triangle? Half into base into height. Half into base into height. Means can I say area under the graph is simply area of what? Geometrical shape. Which shape? Geometrical. But it should be always under the graph. ये ध्यान में रखना. It should be always under the graph. अगर तुम यहाँ पे देखोगे, that means it's simply a product of y into x, students. It's a simply product of y into x. चलो, y क्या है? Sir, ये है display distance covered, which is in meter. Time is in second. तो मुझे बताओ, students, do you have any physical quantity giving you meter into second as a unit? Students, meter into second. Do you have any physical quantity called meter into second? No, sir. Not at all. Meter per second है. Meter per second is speed या velocity. So a student who's listening to me will say, sir, that means you are trying to say that if I try to find out slope of distance and time, my formula will be half into base into height. But if I take the base, my answer is in second. If I take the height, my answer is in meter. So my final answer will be in meter second. But meter second does not exist for any physical quantity. So does area under the graph exist for distance and time? No, sir. Not at all. ये बहुत ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. एरिया किसके लिए एप्लीकेबल होगा और एरिया किसके लिए नहीं होना चाहिए. यानी स्टूडेंट्स जब भी कोई भी क्वेश्चंस यू ट्राई टू गो फॉर फिजिक्स जहाँ पे स्लोप आता है, जहाँ पे एरिया आता है, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, स्लोप का मतलब ऑलवेज रेशियो ऑफ y बाय x. ऑलवेज रेशियो ऑफ y बाय x ध्यान में रखना. यानी जो तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी y पे दिखती है ना स्टूडेंट्स, उसका यूनिट ले लो, और जो x में फिजिकल क्वांटिटी थी उसका यूनिट ले लो, और फिर उनका रेशियो निकालो. If that ratio gives you a certain unit of physical quantity, yes, that becomes a slope. What is area under the graph? It's actually the product of y into x. Now, suppose if I happen to go for, this is displacement time graph, students. Agar mujhe chahiye, what is the area under the graph? So this becomes the area under the graph. Shaded portion is this much till time t. तो यहाँ पे भी क्या होगा? Sir, half into base क्या है? Time, which is in second. And height, that is displacement, which is in meter per meter. Do you have a unit called meter second? No. So area is not possible over here also. So now if I ask you students, is area under the graph possible for distance time graph? Not at all. Is area possible for displacement time graph? Not at all. Can you tell me, is area possible for velocity time graph? Yes, sir. Yes. Anybody can tell me which physical quantity other than Mihir? Other than Mihir? Sir, it would be displacement now. Very good. If Mihir is not there, Gaur is there to answer. If Gaur is not there, Mihir is there to answer. है ना? Students, ऐसे मत करो students. Gauri, you are from which branch, Gauri? Andheri? Sir, Panvel branch. Oh my God, you are from Panvel. Okay. And Mihir, you are from which branch? Borivali branch. Okay, very well. Have you been attending lectures वहाँ पे? Yes, sir. Recently I've started. Okay, fine. Okay, students. तो देखो यहाँ पे what she's saying it, it's area under the graph. So it's area under the graph यानी देखो यहाँ पे possible है. It's velocity and time graph. देखो area under the graph यानी क्या होगा students? ये देखो ये geometrical shape हो जाएगा. ये क्या होगा? So area under the graph will be half. Base is time in second. Height is velocity, which is in meter per second. Second and second will get cancelled. Which physical quantity is left? Meter. So what is the area under the graph? So the area under the graph, इसका जो area होगा students, that will be displacement. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Okay. So now we have done with uniform speed, uniform velocity, uniform acceleration also, and I've explained you graphically also. Do keep in mind slope का मतलब क्या, gradient का मतलब क्या, area under the graph का मतलब क्या.
Can I erase this, students? So 1 minute. Okay. Come on, the rest of the students. Preet, Arman, Avneet, Ayan, Carol, Diya, Dhruv, Harsh, Harshada, Jai, Jyoti. Jyoti, you have 2 devices or what? No, 1 device only. Jyoti, you are from TP Bhatia. Krish Acharya, Krisha, Meenu, Nitu. ओम पंचाल क्या हो गया? ओम पंचाल तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो? ओम, हाँ ओम, ओम आर यू देयर? Yes, sir, I am there. तो क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है सर. हाँ तो रिप्लाई करो ना, तो आंसर दे तो भी, बिकॉज अदर आंसरिंग माय डियर. ठीक है सर. ऋषि, साक्षी, शीना, श्रेया, शुभम, उमेर, याश, Ratu, Yash, and finally Zia, always at the end of the class. Alphabet Z, है ना? A to Z में Z आता है, इसलिए बेचारी आई बहुत नीचे होती है ना Zia? Yes, sir. Okay, can I erase the students? इसको erase कर दो अभी मैं. Yes, sir. अभी स्टूडेंट्स हम अभी जाएंगे दूसरे डेफिनेशंस के ऊपर. ओके, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये ग्राफ यूनिफॉर्म थे. देखो एरिया कैसे निकाला मैंने, स्लोप कैसे निकाला. प्लीज अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. Excuse me, sir. Tell me. Sir, for the previous one wherein the area of geometrical shape was there, you wrote that y into x would give us the area. It would be y into x by 2, na sir, because half is also there. Yes, my dear. That was a general conclusion I tried to put forward. और ये पता चला? Yes, sir. देखो, अगर मैं कोई भी ग्राफ दूं, and if I tell you to find out area, so which physical quantity will come? That will come to know by multiplying just the unit of y into x, na? Yes, sir, I got it. And to find out the exact area, of course you have to go for the geometrical shape. वो तो सिर्फ मैंने एक gesture दिया था कि एरिया के लिए सिर्फ प्रोडक्ट के हिसाब से हमें जाना है. ओके, Yes, sir.
Anybody? Variable or non-uniform speed, variable or non-uniform velocity, variable or non-uniform acceleration. Follow. Anyone who can explain this? A body Hmm. covers different distance in uniform time in same Different distance in different time or different distance in different same distance time? in same time, Or or it covers same distance in different time. absolutely correct. Same thing will be applicable over here. मुझे बताओ इसके ग्राफ्स कैसे होंगे? Well, the graph will be straight line. Suppose if I want to go for variable speed, Sir, it will be straight line but not 45 degrees. it will be straight line but not 45 degree. Mehir, Yes, sir. वापस पूछ रहा हूँ मैं. Sir, it Variable will be speed. curve. Absolutely correct. It will be curve. Students, uniform में straight line होता है, non-uniform में हमेशा curve होगा. Now, for example, अगर suppose मैंने ऐसे टाइप का ग्राफ ले लिया, ये non-uniform है. Students, this is a non-uniform graph. Non-uniform graph. Now, see, answer to students, everybody listen carefully. ये तुम्हारा origin है, ये origin है. अगर मुझे variable speed के बारे में समझना है, students, so I'll take distance over here and time over here. Now, what exactly definition Mihir said it? Everybody listen carefully. Let me keep time constant. See the distance covered? Please, everybody carefully look into it. जब भी इसको समझना है तो उसको ग्राफ से समझो. Definition को mug up मत करो, students. Don't memorize definitions. Understand graphically. You will get concept more faster. Now see, am I taking equal time? Is the time same? Yes. Yes. But is the body covering equal displacement? No. See the displacement covered? No. The body is covering unequal displacement, but in what time? Same interval. Then the body is said to move with what? It's said to move with non-uniform speed. समझ में आ रहा है? Is this clear to all the students inside the group? Yes, sir. Yes, sir. All of you all, not these 3 students who are replying and responding students. I want everybody of you all. मैं ये तीनों को नहीं सिखा रहा. Students, even your parents have also paid money, please. Don't blame online that because of online we are not able to understand. I'm going slow. I'm not going to that amount of rush in that case. I'm all the time naming you all the time, making you all to be awake inside the classroom. But at the same time, you should understand that this guy is putting in efforts to make us things clear with you all. So it's our duty to say yes or no. अगर नहीं होगा, अगर कुछ भी serious भी होगा तो बिंदास पूछो ना. Ask के सर मुझे नहीं पता चला. Can you tell me again? I'll tell you. Nothing to worry about it. लेकिन blindly मत accept करना students. बाद में तुम ही problem में आओगे. So when a body covers the answers to students, when a body covers unequal distance in equal interval of time, the body is said to move with non-uniform speed. अभी देखो ये non-uniform speed है. हेलो ये non-uniform speed है. मुझे बताओ क्या यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हो तुम? क्या यहाँ पे तुम एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकते हो? Yes, sir. मिहिर वापस पूछ रहा हूँ. सर हम स्लोप टेंजेंशियल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ग्राफ अंडर द ग्राफ निकाल सकते हैं. एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकते हो? Can I find out area under the graph for this? आया ना? Yes, sir. We can use integration. My dear, area under the graph is not possible. Again, I'm telling you. तभी जाके मैंने गौरी देखा. गौरी अभी देख ये गलत गया कि नहीं? गौरी इसने बोला तो जैसे किसी ने पहले एरिया के बारे में बोला ना, you have to say y into x. y क्या है? मीटर में. s क्या है? सेकंड में. Do you have any meter second as a physical quantity?
No, sir. That is why area is not possible for this graph. So what if it's non-uniform? Mihir, did you get it? Yes, sir. What you said is absolutely correct. Somebody said it integration. Who said integration? Me, you only said it or somebody else? Sir, I thought you were asking that if you can just calculate the area, not the physical quantity. Very smart. Veer is very smart. फिर देखा वीर कैसा है कितना स्मार्ट है. ओके मैंने इसके लिए बोला, मैंने 2 से 3 टाइम जानबूझ के इसी के लिए पूछा मैंने. लेकिन स्टूडेंट्स मिहिर का आंसर सही था. किसके लिए? अगर ये ग्राफ में अगर ये डिस्टेंस नहीं होता और उसके जगह पे मैंने स्पीड लिखा होता, समझ में आ रहा है? तो एरिया अंडर द ग्राफ पॉसिबल होता. और जो उसने आंसर बोला ना इंटीग्रेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है वो. और वो मैं बता चुका हूँ तुम लोग को इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स करने के टाइम पे. सो जब भी नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ आया तो उसका स्लोप कैसे निकालते हो? तो स्लोप के लिए हमें जाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन. एरिया अंडर ग्राफ निकालना होगा तो मुझे जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन. लेकिन इसके लिए फॉर दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल. दिस पार्ट इट्स पॉसिबल. अगर सपोज ध्यान से देखना, अभी अगर सपोज मुझे स्लोप चाहिए, ध्यान से देखना स्टूडेंट, स्लोप चाहिए, चलो स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा? आई टेक अ स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ग्राफ. ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन. तो कैन आई से दिस इज y2 y1 x2 x1. स्टूडेंट्स ये जो स्लोप है ना y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये क्या दिखाता है? स्टूडेंट्स this speaks about average speed. Which speed? Average speed. Means if I'm getting distance time graph, the answer is students, if I'm getting distance time graph and if I tell you to find out the slope of that particular non-uniform graph, I'll get average speed. अगर तुम्हें ध्यान से तुमने किया होगा बेसिक मैथ्स के अंदर, और सपोज अगर मैंने इसी को अगर मैंने टेंजेंट बना दिया स्टूडेंट्स, ये पॉइंट को मैं यहाँ पे लेता हूँ और मैं टेंजेंट बना देता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा? स्पीड instantaneous. At a particular instant. And speed instantaneous is defined as limiting ratio of infinitesimal distance with respect to time, however short the time interval may be, that is simply differentiating distance with respect to time. यानी स्टूडेंट्स जब भी मैं इंस्टैंटेनियस के बारे में बात करूं तो यू कैन सिंपली गो फॉर डिफरेंशिएशन. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सबको? यस सर. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स. और आगे जाके जब भी हम काइनेमैटिक्स 2 के एंड की तरफ जाओगे ना, ये तो काइनेमैटिक्स 1 है, ये चीज तुम्हें काइनेमैटिक्स 2 में एक एक्सरसाइज है, वहां पे मैं आगे जाऊंगा तभी मैं बताऊंगा ना, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन थ्रो करूंगा तुम्हें, तो वहां पे तुम्हें समझ आना चाहिए कि इंटीग्रेशन करूं या डिफरेंशिएशन करूं टू गेट द आंसर. यहाँ पे एरिया पॉसिबल है नहीं. अभी देखो ये कौन सा ग्राफ है सर? आप यहाँ पे बात कर रहे हो वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, तो ये किसका ग्राफ होगा सर? इट्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. एग्रीड? अगर मैंने पूछा स्टूडेंट्स व्हाट एग्जैक्टली स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो आई कैन टेक अ स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ग्राफ स्टूडेंट्स. ऐसा मैं ले लेता हूँ. ये देखो ये मेरा y2, ये मेरा y1, दिस इज x2 x1 एंड दिस इज x2. y2 minus y1 upon x1 minus x2 we consider. So what exactly this is going to give me? This is going to give me average velocity. If I happen to go for a tangent at any point, suppose ये एक point A है और ये point B है, suppose ये जो chord है ना, या chord की जगह पर मैं इसको चलो secant बोलता हूँ मैं, चलो ये secant है स्टूडेंट्स, ये secant है. अगर मैंने point A को B की तरफ लिया, ध्यान से सुना, if I take this particular and take it closer to B, what exactly my secant now becomes? A tangent. The way this becomes secant becomes a tangent. When it becomes a tangent, can I say this becomes instantaneous? So now if somebody asks me, what exactly velocity instantaneous? So velocity instantaneous is defined as limiting ratio of infinitesimal displacement with respect to time
however short the time interval may be, simply I need to go for ds by dt, differentiation करना पड़ेगा। यानी स्टूडेंट्स अगर नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है और स्लोप निकालना है तो डिफरेंशिएशन। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. All of you, all just 2 students. What about you, Gauri, Prisha? Yes, sir. I feel it. Yes, sir. Now there were students who were 34 to 35. See, out of that, 4 students are not there. This is what the problem is. They just 1 hour is over, and parents are not at all bothered about them. This is how the students fool around with their studies. Parents को भी उल्लू बनाते हैं, इंस्टीट्यूट को तो उल्लू बनाते ही है, लेकिन parents को भी उल्लू बना देते हैं. I don't know, how do parents take them? Maybe these kids don't listen to the parents also. What about the way? The way is an outsider. To hell with the idea now. जब हम हमारे पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, तुम कौन हो? It seems like that. This is something really bad. Students, मुझे बताओ इसका एरिया अंडर द ग्राफ पॉसिबल है? हाँ गौरी, इसका मैं अगर एरिया अंडर द ग्राफ तुम्हें निकालने के लिए बोलो, चलो ये पार्ट है, इज एरिया अंडर द ग्राफ पॉसिबल? Not possible, sir. It's not possible. Why not possible? So because if we do y into x, we'll get the unit as meter into second, which is not any unit of any quantity. Very good, very good. लेकिन अगर सपोज मैंने तुम्हें ये ग्राफ दिया, is it uniform or non-uniform graph? Non-uniform. Okay. Can you find out slope in this case? Can you find out area in this case? Sir, if we draw a tangent at a point, then we can find out the slope of the graph. That becomes instantaneous. Yes, sir. And if I take any 2 points, suppose if I happen to go for the curve part of it, अगर मैंने ये वाला लिया है और यहाँ पे मैंने कोई 2 points ले लिया, am I getting it? And if I go for these 2 points, so that becomes average. Yes, sir. And if I happen to go for tangent at 1 point, a tangent at any point, what exactly that gives me? Instantaneous. Instantaneous acceleration. Absolutely correct. So slope of the graph will be what? Acceleration. And acceleration को लेके आने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? You have to go for differentiation. Is this clear? मुझे बताओ. dv by dt. So the slope of the graph would be instantaneous acceleration, right? Which one? Yes, why not? Okay. Whatever acceleration. See, जब भी तुम differentiate करोगे ना तो तुम्हें पूछेंगे find out the acceleration at time 4 seconds. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Everybody, see, Gauri has raised a question, क्या instantaneous होगा? Instantaneous का मतलब उस time पे. अभी ध्यान से सुना students. Everybody listen carefully. जब भी तुम इसके problem solve करोगे ना तो तुम्हें कैसे देंगे मालूम है students? V is given to us 5t square minus 2t plus 3. Everybody listen carefully. Mihir, Gauri, Prisha, the other guy who responds, please listen carefully. ये मैंने तुम्हें velocity दे दिया. Agreed? फिर Yes. मैंने तुम्हें पूछा students find out acceleration of the body at time 2 seconds. So students मैंने क्या पूछा बताओ? मैंने acceleration पूछा at a particular time ना? Yes, sir. That is instantaneous. और वो instantaneous कैसे निकालोगे acceleration? फिर इसको differentiate करो ना. तुम्हारा equation क्या है? V is equal to 5t square minus 2t plus 3. इसको differentiate करो. Orally कर सकते हो ना? Yes. हाँ students? तो क्या होगा? Yes. क्या होगा? 10t minus 2 है ना? 10t minus 2. t की value क्या है? 23. So 20 minus 2, what is my answer? Acceleration? 18. Yes, sir. क्या ये clear हुआ students? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Now अगर suppose मुझे area under the graph चाहिए students, मुझे area under the graph चाहिए, यानी देखो अभी देखो area under the graph का मतलब क्या हुआ सर? ये point
और ये पॉइंट। तो एरिया द ग्राफ का मतलब क्या करोगे? सो एरिया द ग्राफ का मतलब आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये पार्ट है ना, और फिर इसके लिमिट्स लेने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट्स। ये देखो, ये तुम्हारा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt होगा। एग्रीड? यानी स्टूडेंट्स स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ध्यान से सुनना, अगर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया का मतलब क्या हुआ सर? वेलोसिटी इनटू टाइम। व्हिच फिजिकल क्वांटिटी विल गिव मी एरिया स्टूडेंट्स? Acceleration. एक पंच देना चाहिए, एक पंच देना चाहिए गौरी। एरिया मुझे चाहिए यार, प्रोडक्ट लेना। Sorry, displacement. इसलिए मैंने बोला y इंटू एक्स को ध्यान में रखो। समझ में आया रीजन क्यों? यानी उससे तुम्हें तुरंत फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चलता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, स्लोप रेशियो, एरिया प्रोडक्ट। तो अगर मैं प्रोडक्ट लूंगा तो बोलोगे अरे हाँ सर, ये तो मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में है, तो मुझे मीटर मिलेगा। यानी मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो सर ये तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि टाइम टेकन इज वेरी स्मॉल and that will be v into dt. What I need to find out for the total journey from t1 to t2, limits आ गया, तो integration देखो, what is integration of ds students? Integration of ds will be s v constant. What is integration of t dt? t. Do I have a lower limit? Yes, t1 and t2 are the limits. आ गया तुम्हारा आंसर? Yes, sir. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन कब यूज करना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everyone. Prisha, what about you? Zia, what about you? Yes, sir. Understanding. Okay, good. Zia, you? Yes, sir. नेक्स्ट टाइम पूछूंगा जब भी मिलोगे टीवी पार्टी में, तो आई आस्क यू, इफ नॉट देन Yes, प्लीज sir. आस्क अगेन। हाँ बिंदास आंसर देना प्लीज। स्टूडेंट्स ये तुम्हारा होगा वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म। तो स्टूडेंट्स अभी देखो ध्यान से सुनना, अगर कभी किसी ने डेफिनेशन पूछा व्हाट इज वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल वेलोसिटी इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स ऑल। जब भी तुम वेरिएबल के लिए जाते हो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज, हमेशा एवरेज। तो एवरेज का एक सेकंड वे ऑफ अप्रोच आल्सो इज देयर स्टूडेंट्स। अगर किसी ने पूछा स्टूडेंट्स when do we learn average? Students, when do we learn average? Average is always learned whenever the body is said to go with non-uniform. Can I erase this? इसको मैं erase कर दूं students? Yes, sir. Okay. So now when somebody asks you what is average speed, then your answer will be total distance upon total time. Okay, this is total distance upon total time taken. ये average speed का formula है। Average velocity का क्या होगा students? Total displacement upon total time। यानी यहाँ पे होगा s1 bar plus s2 bar upon t1 plus t2. This answer also will be in meter per second. This also can be considered in meter per second. Simply it's a scalar and it's a vector. So students, average speed का मतलब क्या? Total distance covered by the body to the total time taken. Average velocity is total displacement covered by the body to the total time taken. Now simple question on to the students. अगर suppose मैं बोलूँ you're starting from point A, you move from point A to B 400 kilometers. Time to go was 4 hours. You came back from B to A, same distance. Time taken is 6 hours. मुझे बताओ क्या ये जर्नी यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म था? A to B जाना, B से आना, क्या ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म?
नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? देखो डेफिनेशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब मैंने डेफिनेशन पूछा तो मिहिर ने 2 डेफिनेशन बोले थे, दूसरा वाला मैं पकड़ रहा हूँ। दूसरा डेफिनेशन क्या बोला था मिहिर ने? मैंने बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, ऑफ कोर्स नॉन यूनिफॉर्म हुआ, या अनइक्वल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ। अभी सपोज मैंने यहाँ पे पूछा स्टूडेंट्स ये नॉन यूनिफॉर्म है, मैंने पूछा यहाँ पे कैन यू फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो व्हाट विल बी आंसर स्टूडेंट्स दोनों केस में? कोई बता सकता है? Find out average speed for the course of journey and average velocity for the course of journey. Anybody? Average speed will be 1 by 8. Wait. You don't answer. You don't answer. I want somebody else. अरे next time से मिहिर को मैं zip करूंगा, मैं सेलो टेप लेके आऊंगा। गौरी, are you there, गौरी? Sir, yes, sir. Okay, तू कहाँ? Where do you stay? Sir, Panvel. हाँ, तो पनवेल से तेरे को आना पड़ेगा। ये जो है ना, ये बंदा कहाँ पे रहता है पता नहीं, लेकिन हम जाके उसके मुंह पे सेलो टेप लगाएंगे। ओके? Yes, हाँ? sir. Okay. Mir, when you ask, then you are going to answer. Okay, Mir? Yes, sir. Okay, that doesn't matter, my dear. At least I want somebody else also to speak it out. They are not speaking. That's the biggest problem with happening. Students, मुझे बताओ क्या यही होता है क्या? दूसरे लेक्चर्स में भी यही होता है क्या? हार्डली 4 स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्स क्या 4 से 5 का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं है। Is it so? It's happening in all the other lecture students. I'm here. I want to ask you. Yes, sir. Is it that the response is only by 4 or 5 students only? I don't know. I answer in all the lectures. Okay. No, I'm speaking about what about the other students? Is a similar kind of thing is going on or what? Or is it so it's only in this lecture hardly 4 to 5 students, the rest 15 students are answering? 1-5. No, it's like the lesser half only answers. Okay, fine. Okay, can anybody give me answer for average speed and average velocity? Yes, me, come on, you answer. Yes, sir. Average distance will be 80 kilometer per hour. Okay. And Average average speed. speed, yes, And average velocity? 0. Okay. It seems that somebody was posting Prisha Yogi. No, my dear, it's not 80 meters per second, it's 80 kilometers per hour, Prisha. And Gauri was raising hand, fine. Carol also has answered. Very good, Carol. तो आंसर दो ना यार, ऐसे क्या करते हो? स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, एवरेज स्पीड का मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस जाने का 400, आने का 400, टू गो व्हाट इज द टाइम टेकन 4 hours, टू कम बैक इज 6 hours. So what's your answer? 800 upon 10. So what's my answer? Prisha, 80 kilometers per hour, because I had given kilometers an hour, not meter per second. क्या ये clear हुआ Yes, sir. students? First answer. Now second case is average velocity. What is average velocity? Total displacement, students, S1 bar plus S2 bar upon T1 plus T2. Now total displacement का मतलब क्या? First you are going towards B. That means assume this direction to be positive x-axis. Then you are going from B to A. Assume this is negative x-axis. तो displacement अगर तुम देखोगे तो ये plus 400 में मिलूंगा, प्लस ये जो सेकंड डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं minus 400 लूंगा. What is the total time to go? 4 hours. Come back is 4 hours. Sorry, 6 hours. What is my answer? क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Any average speed students is 80 kilometers per hour, but average velocity is how much? Why average velocity is 0? Because what is the total displacement? इसके पहले मैंने displacement का question पूछा था circle वाला. मिहिर ने last वाले का answer दिया था for one complete revolution. You started at a point and you came back to the same point. What did Mihir say? Displacement was 0.
Same thing over here. You started at point A, you went at B and came back at point A. What was the result? And displacement is 0. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can I erase this now? Yes. Okay. Now let us solve some questions. Listen carefully. Okay. Okay, students, now please pay attention for this question. Okay. Think as if there's an athlete, students. Okay, a runner, an athlete. An athlete is trying to run 150 meters in 15 seconds. These students are listen carefully. This is point A. Let us take this as point B. Let us take this as total distance to be as 150 meters, and the runner is completing this particular 115 meters, students, in 15 seconds. Good race. Am I getting it? 15 सेकंड में 150 meters को run करना, students. Okay. Now, what exactly the runner do? The runner starts from A, reaches at B. Okay. Then what exactly does? He again turns around. The runner turns around and he jogs 50 meters back from the starting point in 25 seconds. Okay. Then turn around and jogs 50 meters back. यानी यहां से वो 50 मीटर वापस आता 2 points. Okay, 50 meters back. Okay, towards the starting point. In time, देखो यहाँ से यहाँ पे 15 सेकंड, लेकिन ये 50 meters के लिए 25 seconds लिया, because he's just jogging. यानी ये जो A to B है ना, वो sprint है. Students, A to B, I don't know how many of you are athletes and how many of you have run a race in your schools. Okay, there are two kinds of races, students. One is considered sprint race, the other one is called as a marathon type of it. Okay, sprint races are fast runners, 100 meters, 200 meters, 4x100 relay. Okay, ये सारे sprint होते हैं, वहाँ पे fastest speed होती है. लेकिन when it goes to 400, 800, getting it 1000, 1200, all these multiples of 4 का, क्योंकि एक circle 400 meters का होता है. एक proper ground अगर तुम देखोगे तो it is 400 meters का ground होता है, तो उसके multiples में तो वो टाइप का jog के जैसा हो जाता है वो, तो वो टाइम के ऊपर होता है. तो जाने के लिए वो स्प्रिंट में गया और रिटर्न आने के लिए 50 meters उसने 25 सेकंड लिए, reaches at point C. The question asks the students, what is his average speed and the average velocity for the total time? Okay, so question asks, what is his average speed and average velocity for total time, and for the total journey? क्या ये question clear हुआ students को? Yes, sir. चलो, calculate and get me the answer. One who gets the answer, raise your hand, please.
Mihir has raised hand. Anybody else? Carol. Yes, Carol, can you unmute? Yes, sir. Hello. So first we have to take 150 meter and 50 meters. and Okay, add so it. total. Can I say total distance is AB plus BC? Yes, sir. Time taken in the first case, we taking 51 plus 52. Yes. Right? Then Huh? 200, 140. Okay, so that is 150 plus 50 upon total time is 15 plus 25. That is 240. So what's the answer? 5 meter per second. Okay, students, that's the average speed. Average velocity क्या होगा? Yes, Carol, average velocity. 1 second, sir. I'm sorry. Okay. Mihir has raised hand. Prisha, Gauri. Yes, Prisha. Chalo, Prisha, bolo. Yes, sir. Bolo. Average velocity. AB minus BC upon T1 plus T2. No, you should say vector AB Sorry, sir. plus vector BC upon T1 plus T2. हाँ? Yes, sir. तो AB कितना होगा तुम्हारा plus 150 plus वापस BC का मतलब you are trying to move from right to left, so this becomes minus 50. Agreed, students? And this will be 15 plus 25. Clear? Yes, sir. So what is the answer will be? So 150 minus 50 upon 40. So can I say it's 100 upon 40? What's the answer of 100 upon 40? 2.5 meter per 2.5 second. what? Cockroaches या buffalo? Meter per second. क्या बात है प्रिशा, cockroaches buffalo बोला तो सीधा मीटर per second पे आ गई. See students, how exactly she has solved it? Even Gauri knew it, even me knew it, even Carol was also trying it out, was able to get it. So देखो क्या it wasn't easy. और देखो ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, ये वेक्टर्स में लिखा मैंने. वेक्टर्स क्या लिखा था? डायरेक्शन. स्टूडेंट्स अभी देखो एक सिंपल हम लोग लेते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी. स्टूडेंट्स तुमने जहाँ कहाँ से शुरू किया? तुमने पॉइंट ए से शुरू किया. तुम पहले गया ए टू बी, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. फिर तुम आए बी टू सी. स्टूडेंट्स मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from initial position. Can I say ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन हो गया है ना? तुम बी से वापस सी पे आए, तो स्टूडेंट्स ये होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट. तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हाँ सर, ये तो 100 था. 100 में से आपने 50 निकाल दिया. सॉरी, ये कितना था? 150 था. 150 में से आपने 50 निकाल दिया, तो बचा कितना? 100. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. Can I erase this, students? Yes, sir. Yes, sir. sir. Okay, students, now please try to solve this, okay? I'm giving you this question. Understand it very carefully, listen very carefully, and try to solve and get the answer in the first attempt. It's a good question, okay? थोड़ा सा time consuming होगा. Now listen carefully, students. What the question speaks about, okay? A body covers 1/3 of its journey with a speed v0.
Okay, a body covers 1/3 of its journey with the speed v0. यानी ये सोचो कि body starts from point A and the person reaches at point B. If I say 1/3, this becomes 2/3, and this is 3/3. So students, 1/3 of the journey. Let us say the total distance be x, total time be t. Agreed? If I say 1/3 of the journey means, can I say x/3? Students, that's the distance covered in the first case. And this distance is covered with a speed v0, students. Students, can you tell me what is the time taken in this case? कोई बता सकता है what is the time taken over here for this 1/3? Speed is equal to distance upon time. Since speed is equal to distance upon time, so time क्या होगा? Distance upon speed. How much is the distance? How much is the speed? क्या ये clear हुआ सबको? Yes, sir. Please listen carefully. I'm trying to explain you a particular problem, लेकिन मैं पूरा solution नहीं दे रहा हूँ. मैं सिर्फ problem को explain कर रहा हूँ to start off with it. I'm giving you a push. So listen carefully that a body starts its journey from point A, or a particle starts its journey from point A, reaches to point B, let the total distance be x and the total time taken be t. Then they are saying it that 1/3 of the journey, so x/3 of the journey is covered with the speed v0. So what is the time taken for 1/3? x/3 v0. अगर ये 1/3 है, तो what is the remaining distance? तो मुझे बताओ what is the remaining distance? 2/3. Remaining distance क्या हो जाएगा? तो मुझे सर रिमेनिंग डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस x है, इसमें से इसको निकालना पड़ेगा, तो x माइनस x/3 निकाल दोगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2x/3 होगा कि नहीं होगा? आया ना स्टूडेंट्स यहाँ तक? एग्रीड? Yes. Yes, sir. What about remaining time? Students, what about remaining time? What is remaining time? What is the total time taken? T. उसमें से कितना टाइम लिया 1/3 के लिए? x/3. तो can I say remaining time will be t minus x/3 v0. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. प्लीज क्या इतना सा क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो आई डोंट वांट टू लेक्चर Sir, एंड वाइंड अप द मीटिंग. हाँ बोलो. can you explain the remaining time part again? Okay, what is the total time? This question is raised by whom? Prisha. Prisha, can you tell me what is the total time taken for T. A to D, A to B, T? How much is the time taken for A to C? x/3 v0. So what is the time, the balance time remaining for the rest of the time taken for the journey? क्या होगा? Okay, sir. Understood. Thank you, sir. सबट्रैक्ट किया मैंने बस, टोटल में से उसको निकाल दिया. Yes, sir. यानी देखो मैंने दो चीजें फाइंड आउट की. मैंने तो रिमेनिंग टाइम फॉर सी टू बी, यानी कितने टाइम में बॉडी सी टू बी तक जाएगा, ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना ये है. अभी मैं प्रॉब्लम आगे पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुना. द रिमेनिंग पोर्शन, the remaining portion of the distance was covered with a velocity v1 for half the remaining time and with velocity v2 for other half of the remaining time. First of all ध्यान से सुनना. The remaining portion of the distance was covered with a velocity v1 for half the remaining time and with velocity v2 for other half of the remaining time. So now if I say remaining time is this, okay, half the remaining time. Students, what is half the remaining time? Means what? What should I do? Half the remaining time, यानी क्या करूं मैं? 1/3. तो कह रहे से ये पूरे फ्रैक्शन को सर ऐसा करो ना, आप डिवाइड बाय 2 कर दो. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्यों टेंशन ले रहे हो यार? क्यों इतना सोच रहे हो? कि इतना टेंशन ले रहे हो? जस्ट लुक एट योर इंग्लिश. हाफ द रिमेनिंग टाइम ये था, उसका आधा लेना, बस खत्म हो गया. एग्रीड? अभी देखो ये जो था, ये जो है सी से बी, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्टेंस was covered, यानी इसमें से part of the remaining distance was covered with v1 and part of the distance was covered with v2. So the remaining portion of the distance was covered with v1 for half the remaining time. For how much time? Half the remaining time. Agreed? Yes, sir.
for half the remaining velocity for half the remaining time, and with velocity v2 for other half of the remaining time. Other half यानी यही होगा, है ना? यानी देखो स्पीड तुम्हें मिल गया, टाइम तुम्हें मिला, यहाँ पे तुम्हें स्पीड मिला, यहाँ पे तुम्हें टाइम मिला। अभी मुझे बताओ रिमेनिंग के लिए कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस? कैन यू फाइंड द डिस्टेंस? लेट मी टेक अ पॉइंट समवेयर E एनीवेयर। E यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। So what exactly speed is distance upon time? So students, what is the remaining? What is the distance covered over here? The distance covered x2 will be equal to how much? What is the distance covered? Speed into time. What is the distance covered over here? Speed into time. स्टूडेंट्स x2 और x3 है क्या? x2 और x3 है क्या? रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी शायद यहां से यहां तक x2 होगा, तो यहां से यहां तक x3 होगा, या ये कम होगा, या ये ज्यादा होगा, या ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन x2 x3 है कि नहीं? तो कहने से ये रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया, ये रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया। हाँ सर, ये देखो आपने रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल दिया, आपने यहाँ पे भी रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल दिया। क्या ये क्लियर हुआ इक्वेशन? Yes, sir. Yes, sir. Again, I'm repeating the entire problem. Please, students, I'm explaining with this. इसके बाद में मैं अनसॉल्व प्रॉब्लम exactly identical थ्रो करने वाला हूँ, वो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट पे करेक्ट चाहिए। वापस ये प्रॉब्लम पूरा पढ़ रहा हूँ मैं। A body covers 1/3 of its journey. A body covers 1/3 of its journey with a speed v0. Let us the total distance bx, total time bt. 1/3 of the journey is x by 3. Speed is v0. Time taken for the first part of the journey, इसलिए मैंने इसको t1 लिया है, x/3 v0. Agreed. What is the remaining time will be? T में से इसको निकाल दिया तो ये remaining time हुआ. What is the remaining distance? X में से इसको निकाल दिया तो 2x by 3. Now this remaining time का आधा यानी ये हुआ. I get it? यानी सोचो टोटल, ध्यान से सुना, टोटल टाइम 10 आवर्स है, इसके लिए 7 घंटे लगे, तो यहाँ पे 7 घंटे लगे, 7 आवर्स बचे। 7 आवर्स का आधा यानी 3.5 घंटे यहाँ पे, 3.5 घंटे यहाँ पे। लेकिन ये जो 3.5 घंटे वो स्पीड v1 से गया, ये 3.5 घंटे स्पीड v2 से गया। तो कैन यू फाइंड आउट डिस्टेंस? हाँ सर, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Now assuming the body always travels in a straight line. Now see, the question goes with respect to what? Linear motion. Are you getting it? Find the average velocity. And average velocity is defined as what? Total distance upon total time. यानी मुझे x upon t क्या आंसर चाहिए? क्या कोई आंसर निकाल सकता है given this as the information? Now can you solve, students? क्या इसको solve कर सकते हो अभी? Average speed. Yes. चलो solve करो अभी. Let's see who's a smart one.
Yes, anybody? Yes, shall I solve it for y'all, students? Can you do it for y'all? Sir, I got an answer, but it's like an equation. What kind of an equation you're getting it? Like 2 v naught x plus 3 v naught t minus x in bracket into v1 My dear, you should get the answer of x by t. There should not be any variable x and t on the right hand side. Because total is the total time, no? Students, इसका आंसर निकालने के लिए तुम क्या करो मालूम है? ध्यान से सुनना. Everybody listen carefully. What is the distance covered for C2B x2 plus x3? तो कहने से ये remaining distance होगा. x2 plus x3 becomes remaining distance. तो ध्यान से देखना students. अगर मैं x2 को x3 से ऐड करता हूँ, everybody listen carefully. तो x2 और x3 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट्स, तो what exactly that becomes x2 plus x3 becomes what distance? Remaining distance. And what is remaining distance? 2 by 3. Now can I solve this equation? You have capital T, you have capital T, you have x, you have x. Try to multiply, take t and x on both on one side, get the ratio of x by t. I'm very sorry students, okay? So देखो ना total distance अगर remaining distance क्या है 2x by 3 ले लो, तो देखो x2 plus x3 को ऐड करो अभी, तो देखो ना तुम्हारी इक्वेशन क्या होगा? 2x by 3 v1 into bracket t minus x upon 3 v0 the whole divided by 2 plus now can you solve it students? और ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके सिर्फ तुम्हें x by t को एक तरफ लेके आना स्टूडेंट्स. Now try to solve this. Your final answer should be, अब देखो यहाँ पे मैं final answer लिख रहा हूँ students. Your final answer should be 3 times v0 v1 plus v2 the whole divided by v1 plus v2. क्या ये क्लियर हुआ? तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए. Now see, do you see x and t on the right hand side? Not at all, because I asked you average speed. So this average speed is total distance upon total time. तो मैंने क्या किया मालूम? मैंने एक इक्वेशन बनाया, रिमेनिंग डिस्टेंस का इक्वेशन बना दिया. रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है? 2x by 3. यानी रिमेनिंग डिस्टेंस का मतलब कहाँ से कहाँ तक है सर? c से b की तरफ है बस. c के b की तरफ. हाँ सर, हमें दो डिस्टेंसेस दिए गए.
एक x2 आया और एक x3 आया, दोनों को ऐड कर दो तो दैट बिकम्स माय रिमेनिंग डिस्टेंस। तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर कैन आई राइट ऑन द सेम एक्सप्रेशन विद रिमेनिंग टाइम? व्हाई नॉट? व्हाट इज द रिमेनिंग टाइम? व्हाट इज द रिमेनिंग टाइम? दिस इज द रिमेनिंग टाइम. Half the remaining time will be half the remaining time, and total time for remaining is this much. यहाँ पे भी तुम x by t को साइड पर निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हें v1 और v2 में चाहिए स्टूडेंट्स, इसलिए तुम्हें डिस्टेंस के हिसाब से जाना जरूरी है. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Students, is it clear? Yes, sir. Try to solve this equation now. That is remaining distance from C to a point, that is x2 plus remaining distance is this, is equal to this. यहाँ पे दोनों का LCM 2 आएगा. Students, ये 2 2 जा 4 वहां पे चला जाएगा, यानी 4x by 3 होगा. v1 को t से मल्टीप्लाई करो, v1 को x से मल्टीप्लाई करो, v2 को t से मल्टीप्लाई करो, v2 को x से मल्टीप्लाई करो. फिर क्या करना, x के वेरिएबल एक तरफ लेना, t के वेरिएबल एक तरफ लेना, और तुम्हें फिर x by t चाहिए बस. Try to crack this and get this answer. अभी इसके बाद में ये maths है students. From here onwards it's maths. Try to get your maths correct and get me this answer fast. I want at least 2 students to get me this answer. Excuse me, sir. Yeah, excused. So for average speed, it's like total distance by total time. So why are we taking that remaining distance by remaining time? My dear, average speed means total distance. What is total distance upon total time is x by t only, na? Yes, sir. So when you look at this expression, don't you see you have x and x is a variable in the expression? Yes, sir. Don't you have t and t as a variable in this expression? Yes, sir. So you'll have expression in terms of x and t. हाँ, Yes. तो x को x के टर्म्स को एक तरफ ले लो इक्वल टू के t के एक तरफ ले लो, फिर x by t ले लो, सारे टर्म्स इस तरफ आ जाएंगे, वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा. हाँ, अभी तुम्हारा बात ये है कि आपने रिमेनिंग डिस्टेंस के ऊपर क्यों गया? माय डियर, रिमेनिंग डिस्टेंस इसलिए है कि मैंने कैलकुलेशंस को कम कर दिया. अगर तुम चाहते तो तुम ये भी कर सकते. टोटल डिस्टेंस का मतलब तुम क्या करते मालूम है? x1 लेते हैं, फिर x2 लेते हैं, फिर x3 लेते हैं, उसको पूरा न्यूमरेटर में लिखते हैं, फिर t1 लेते हैं, फिर t2 लेते हैं, फिर t3 लेते हैं, उसका पूरा डिनोमिनेटर. स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू योर कैलकुलेशन? कुछ समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन लेंथियर नहीं हो जाता? देखो ना, x1 देखो, व्हाट इज x1? व्हाट इज x1? x by 3. व्हाट इज x2? ये सिर्फ x2 था. ये क्या है? ये x3 है. अपॉन व्हाट इज टोटल टाइम? What is time taken in the first case? What is time taken in the second case? What is time taken in the third case? That is total time. Are you getting it? Yes, sir. I got it. लेकिन मुझे x by t वेरिएबल चाहिए, तो I can't use that. That's why we went for this. ये तुम्हें और अच्छी तरह से और क्लियरिटी में मिलेगा. वहां पे तुम स्ट्रगल करोगे सॉल्व करना. बाद में करना ना, बाद में करो तुम जो what you said it, you try to do that. You will take half an hour, 1 hour, but then also you will not reach to the answer. After the lectures, Gauri, you only asked me this, na? Or Sir, Pisha, you asked it. actually, I tried that. I was not getting that. That is what I'm telling you. Yeah. क्योंकि तुमने लेफ्ट हैंड साइड में एवरेज स्पीड लिख दिया और राइट हैंड साइड में तुम्हें एक्स और टी दोनों आ रहे हैं, तो तुम इक्वेट किसे करोगे? यहाँ पे तुम करोगे तो तुम्हें एक्स बाई टी सेपरेट मिल जाएगा. अभी देखो यहाँ पे भी एक्स के टर्म्स हो गए, एक्स के टर्म्स को वहां पे ले लो, टी के टर्म्स को यहाँ पे ले लो. यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आंसर में एक्स और टी आना ही नहीं चाहिए. So now please try to solve this and get me this answer. At least I want 2 students to solve this and get this answer fast, so that we can move further at students fast. Mihir, clear with you? Yes, sir. I'm solving. Okay.
Done? Anybody is getting the answer? Okay, let me solve it for you. Can I erase this much part, students? ये erase कर दो? Yes, sir. Okay. Okay, now let me speak about this, students. This is 2x by 3, which is equal to ये जो 2 है 2 है common LCM आ जाएगा, students. So I can consider upon 2 in that case that 2 can take over here. I can take it as 4. ये हो जाएगा v1t minus v1x by 3v0 agreed plus v2t minus v2x by 3v0 agreed. Now if in case if I happen to go for 3 as a LCM, students, so 4x by 3 v1t minus v1x upon and 3v0 as LCM, students, 3v0 as LCM. So यहाँ पे होगा 3v0 agreed minus v1x plus 3v0 v2t minus v2x. 3 and 3 will get cancelled, students. Is that clear? Yes. So now if I happen to go for it's 4x is equal to 3 v1t minus v1x upon v0 plus 3 v2t minus v2x upon v0. Take x terms together, t terms together. So 4x, ये term को मैं यहाँ पे लेता हूँ plus v1x by v0 plus v2x by v0. Right hand side में t 3v1 plus 3v2. Agreed? Now suppose अगर मैं v0 यहाँ पे ले लेता हूँ students, x को मैं बाहर निकाल देता हूँ. Students, I'm removing x outside. ये x बाहर निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया 4 times v0 plus v1 plus v2 upon v0 is equal to t 3v1 plus 3v2. I want x by t. So what is x by t? Total distance upon total time. तो v0 वहां पे चला जाएगा. So can I remove 3 outside? v0 आ गया. ब्रैकेट में क्या आएगा v1 plus v2. डिनोमिनेटर क्या आ गया? डिनोमिनेटर में v1 मैं लिखता हूँ पहले, फिर v2 लिखता हूँ और प्लस 4 times v0. Check out this answer, students. Is it clear? Yes, sir. Students, physics यहाँ तक है. I'm telling you very clearly, students. Please देखो, मैंने speed लिया, मैंने time taken इसके लिए, time taken इसके लिए, फिर distance लिया, remaining distance. Students, यहाँ तक physics है बस. इसके बाद में तुम्हें कैसे सोचना है वो तुम्हारी मर्जी. तुम तुम्हारा इक्वेशन remaining distance के हिसाब से बना के देखो और वो precise होगा. remaining time के हिसाब से देखोगे वो भी crack नहीं होगा. x1 plus x2 plus x3 लोगे t1 plus t2 plus t वो भी नहीं होगा. वो तुम्हारा मैथ्स पार्ट चला जाता है और इसके बाद में पूरा सॉल्व करो तो ये मैथ्स ही है. स्टूडेंट्स, अगर इसकी वजह से तुम्हारा ऑप्शन मैच नहीं होता, तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. अगर तुम यहाँ तक पहुंचे और उसके बाद में तुम्हारे कैलकुलेशन सही नहीं है और तुम ऑप्शन के साथ में मैच नहीं कर सकते हो, प्लीज डोंट ब्लेम माय फिजिक्स स्टाफ. डोंट ब्लेम माय फिजिक्स. ब्लेम दैट योर मैथ्स इज कंपैरेटिवली वीकर टू सी टू दैट योर फिजिक्स इज बिकमिंग टफर. तो थोड़ा सा मैथ्स में भी स्ट्रेंथ रखो स्टूडेंट्स. ऑलराइट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Page number 52, unsolved problem in chapter first one. Come on. Anyone? Ye last question, students. Page number 52, question number first. Can anybody give me the answer for the first one? Okay, from your module, students. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ, students? ये erase कर दो अभी.
Students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. और यहाँ पे तुम्हें जैसे मैथ्स लगे वैसे करो ना स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि जो मैंने किया वही करना है तुम्हें. मैथ्स कैन बी चेंज अकॉर्डिंगली, बट ये तुम्हारा अप्रोच सही होना चाहिए, एंड यू शुड गेट अ करेक्ट आंसर. Not necessary that you have to copy a particular teacher only while solving the solution. हाँ, जब भी तुम फिजिक्स पार्ट में आते हो तो उसके अंदर तुम समझ के ले लो, बाद में तुम्हारा मैथ्स जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे वैसे करो, नो प्रॉब्लम. और वैसे करो कि तुम्हारा टाइम कंज्यूम कम हो, you can get the answer easily. Okay, students, page number 52 in chapter. Question number 1. A car travels first half distance between two places with uniform speed of 60 kilometers per hour. Suppose this is A, this is B, let us say point C somewhere between. Okay, total distance, let me take it as X. So first half distance, okay, at a speed of 60 kilometers per hour. What should be its uniform speed for the second half? Second half के लिए पूछा गया students. Of the distance is X by 2 only. If the average speed over the entire journey, average speed for the journey कितना दिया है? 690 kilometers per hour. क्या question clear हुआ students? Students, is the question clear? Yes, sir. See, 35, 36 students were there. 36 almost. 11 to 12 students have gone. Just 4 minutes left. देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान. गौरी, गौरी कितना बदल गया इंसान, isn't it? आया ना? Yes, sir. Maybe. Yes sir. जबरदस्ती हाँ बोल रही गौरी. Yes, anyone can you give me the answer as fast as possible, students? I want to find out the average speed for the second half. Come on, it's very easy. Average speed is defined as total distance upon total time. Come on, fast. So I had a doubt. बोलो. सर अगर एवरेज स्पीड 90 दी हुई है और फिर एक इसका दिया हुआ है 60, सो आई कांट बी सब्ट्रैक्टेड. क्या बात है. उसका मतलब तुम यहाँ से मुंबई गए और मुंबई से वापस आए, तुम्हारी स्पीड वेरिएबल थी, तो एवरेज क्या किया तुमने, एक पार्ट ऑफ द जर्नी को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो होता है. नॉट, नो माय डियर, इट्स नॉट लाइक दैट. Average speed is for the course of the journey. मुझे uniform speed चाहिए from C to B. So you can't subtract like that. अगर यहाँ पे average speed है, तो average speed कैसे निकालोगे? Sir, average speed is given by what formula? Total distance upon total time. खत्म हो गई बात. What is the total distance? X. Can you find a time in the first case? हाँ sir. Speed is equal to distance upon time. So speed is equal to distance upon time. So what is the time in the first case? X upon 120. Can I put X upon 120 over here? सेकेंड केस के लिए क्या होगा? स्पीड, डिस्टेंस क्या है, अपॉन टाइम. व्हाट इज टाइम इन द सेकेंड केस? कैन आई पुट x अपॉन 2b? आ गया तुम्हारा आंसर. व्हाट इज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी? 90. इज इट x? यस. कैन आई रिमूव x कॉमन? यस. 1 upon 120 plus 1 upon 2b.
Can I cancel x? Now can you solve, students, and get the answer? अभी तुम solve करो, you have to get the value of v. हाँ students, अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Sir. So 90 is equal to what exactly over here will be? सर यहाँ पे आपका LCM होगा 120v, है ना? तो ये 1 प्लस कितना होगा? 60. Is this clear? Yes, sir. Solve it and get the answer accordingly. Sure. हाँ बोलो. Yeah, answer. क्या बोलो? Sir, is it 18 kilometer per hour? Absolutely correct. 18, you're 180. How much it is? 18. 18. No, 18. it 180. 180 kilometers per hour, students. Solve for इसको, you'll get 180 kilometers per hour. Yes, sir. It's 180 kilometer per hour. स्टूडेंट्स अभी ये मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, तुम्हें भी मिलेगा 180 kmph. स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Okay. Next lecture will be continuing further, and next lecture students will be solving some more problems. Okay. लेकिन ये ध्यान रखना students, please go through the concept, go through the theoretical part, and go through the formulas also. Okay, students. Yes, sir. Yes, sir. Have a questions. Okay. Yes, sir. Bye. Yes, sir. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Most welcome. Bye.